I am Dr. M.L. Ali, Clinical Director, Brahmananda Narayana Multispeciality Hospital. And with me, Dr. Abdul Waheed Khan is the Senior Consultant Nephrology. We are going to celebrate World Kidney Day on 10th of March. On this occasion, we want to share some information and spread awareness among general public regarding different kidney diseases. Dr. Waheed, the theme, every year WHO celebrates one day for a particular disease or a particular system, but there is always a theme. So what is the theme for this year's World Kidney Day? Thank you, Dr. Ali, for nice introduction. And as you said, this year's World Kidney Day is having theme to bridge the knowledge gap to better kidney care. Actually, it is a well-known fact that knowledge about the kidney diseases, its treatment and modality, including the transplantation, is really scarce among the general population. We are scared of this disease. We are scared of knowing that someone is undergoing dialysis or planning for transplant. So obviously, the picture is not that dark. What is to be known to the public. So there is some big gap between the knowledge and what is actually the fact. This is mainly to bridge the knowledge between public and treating doctor? Treating doctor and the mode of treatment available for the public. So what are the main symptoms for the kidney disease? How do the patient will be able to know that he is suffering from kidney disease? One of the most common symptom or sign you say a person develops is rise in blood pressure. Okay. And that's true in a normal practice. If anyone develops any sort of problem, and if he goes to any general practitioner, if he check his blood pressure and found to be high, especially in young population, always we should exclude kidney disease. So that is a clue that high blood pressure, that he may or she may developing a kidney disease. Apart from that, patient may develop swelling of body, swelling of face, or loss of appetite, or develop vomiting or tendency to vomiting. These are the common symptoms. Apart from that, as disease progresses, it involves every organ. Patient develop breathlessness, he develop altered sensorium, skin color and texture changes, hair gets more grayish. So literally every organ is involved. He bleeds more, even in female menstrual bleeding prolongs. This happens, but most common is this early symptom, which are generally missed, is the loss of appetite, rise in blood pressure, swelling of the body. This thing has to be kept in mind, and this should be checked properly with develop. If this hypertension, as you said, hypertension is one of the main positive findings in case of any kidney disease. Yeah. So mainly hypertension, there 90% are the essential hypertension. That's no cause. But out of all these secondary causes of hypertension, kidney disease is one of the Most important treatable kidney cause of hypertension. Okay. So what are the other risk factors of the kidney disease? Apart from that, risk factor most common in India and worldwide is diabetes. So any patient who is having diabetes should regularly, at least in a year, should get checked for kidney function through urine examination. That is also very important. Generally in diabetic patient, we used to check creatinine and urea level in blood. But the fallacy is urea creatinine rises when 50% of kidney is already damaged. So to detect disease early, we have to check our urine microalbumin is said a test. That should be checked in diabetic patient yearly. That is the thing. Then other risk factor, as you said, hypertension itself is a risk factor. If he develop hypertension, he may develop this. Then there are certain other medication which are prone to develop this disease. There are some painkiller and other medications a person is receiving.
immunocompromised disease like autoimmune disease like SLE and other rheumatoid arthritis, they used to have some medication, and disease itself both can cause kidney disease. Then there are certain group of people who are genetically predisposed to develop kidney disease. So anyone who is having in family there is a previous history of kidney disease is actually at very high risk of developing kidney disease. So he has to be very careful, and he has to be regularly checking his kidney function. It can be polycystic kidney or it can be other disease. All are having some genetic predisposition. Then in general population, especially in tribals in Jharkhand, what we have seen, they used to have some genetic predisposition to develop shrinkage in the kidney, and they develop renal failure. That is called CKD-U, CKD of unknown origin. These are a few common causes of kidney disease which generally we see in clinical practices. There are many myths among general population regarding this kidney disease. The treatment, rather than the treatment of kidney disease, says they say they are very reluctant for any so one mode of therapy for kidney disease is dialysis. So एक बार dialysis शुरू हो जाएगा तो ये जिंदगी भर dialysis करना पड़ेगा. So there are many myths regarding this. So how to spread awareness in the general population regarding these different myths which are prevalent in general population? That's true. In fact, that's why this year theme is to bridge the gap regarding the knowledge of kidney disease and what people think. Actually, broadly, if you say, then kidney disease is divided into two groups. Any kidney disease. One is AKI, acute kidney injury, which is totally, majority of the time is curable, and patient completely recovers, even if he needs dialysis. Common example is like in malaria, or we used to develop kidney failure after diarrhea, dysentery. In that condition, even if patient is required dialysis to save life, but after a few sessions of dialysis stops and patient completely recovers. So this is one of the example in which starting dialysis doesn't mean you have to continue dialysis throughout the life. Then second group of patient is CKD, chronic kidney disease. This is a more chronic disease. It generally persists, doesn't go. But there are 5 stages in kidney disease. Start from 1, then move to 2nd, then 3, then 4 and 5. 5 is the stage, 5th stage, last stage, where the kidney function is less than 15%. In that condition, we need a support to sustain our life, to live, to be alive. Like to walk in the road, we are using car rather than walking and running all the time, just to save our time, to be more comfortable and reach any place earlier. That's how the dialysis is. Once our kidney function is less than 15%, very bad, in that condition we need support of the machine. Its machine is called hemodialysis machine, and the machine only does the function of kidney. It removes all the toxin from the blood and filter our blood to remove all waste material. That's what kidney does. So this is only dialysis, nothing else. So what our kidney is doing, we can get it done by the machine also. That is the advancement in technology that we can utilize. So there's nothing to be afraid of. Like we are not afraid of using car or any machine in the house. We cook our food in the house, but also we used to have oven in the house. With it, we can use the same process. So it is with the technology that this machine has come up. With that, we can save our life. We can continue our life, live a normal life without any kidney function. And top of that, if we don't want dialysis also, we can go for transplant. Transplant, among all the organ transplantation, kidney transplant is most commonly done. And I think it is most cost effective also in majority of the center, even in private, 4 to 6 lakh or 8 lakh, it can be done. Other transplant are pretty costly. Success rate is more than 95%. And I must tell you this thing, success rate of kidney transplant and survival, the patient
live on the transplant much longer compared to one who is on dialysis or without treatment. So here the question is to survive long. So transplant is an option available, done extensively in any big town or metro. It is available and easily done by all the center. All center have good success rate also. So these are very good things. These are the positive sides of having a kidney disease. Kidney disease doesn't mean you have a death sentence and you are born to die. You have got multiple options. Among dialysis also, we can do the dialysis going to any hospital twice or thrice in a week. Another option of dialysis is also available. We can do at home, at our own comfort. We don't want to go to hospital. Anyone can do. That's very easy to do. And third option is transplant. So we have to choose among them what suits me. Yeah, even after transplant also, a person can lead a normal healthy life. नॉर्मल हेल्दी लाइफ. इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है सब लोगों को जानना कि किडनी डिजीज़ में फॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट बहुत अच्छे अवेलेबल हैं. जो हुआ आज भी हमारे पेशेंट जो ख़राब होते हैं, जो नहीं बच पाते हैं, जो लोग सुन करके डरते हैं कि वो पेशेंट को किडनी ख़राब था मर गया, वो यही पेशेंट होते हैं जो ट्रीटमेंट चूज़ करने में और ट्रीटमेंट कराने में हेजिटेट करते हैं या देर करते हैं. उसकी वजह से डेथ होता है. वैसे लोग जो टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, वो एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं. सारी जो है उनकी रेस्ट्रिक्शन डाइट की ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, पार्टी में आना जाना करते हैं, क्रिएटिनिन यूरिया नॉर्मल रहते हैं. ही इज़ लाइक अदर नॉर्मल पर्सन. इस तरह की वो ज़िंदगी जीते हैं. और ये भी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की ज़रूरत कब आती है? जब एकदम एडवांस डिजीज़ हो जाता है, लेस देन 15%, जब किडनी काम कर रहा होता है. उससे पहले कई साल तक तो सिर्फ दवाओं में ही काम चलता है. नथिंग टू वरी. एक ये फैलिसिस होती है सर. दूसरी फैलिसिस क्या होती है कि लोग ज़रा सा आउट ऑफ द वे भी चले जाते हैं. ट्रीटमेंट शुरू किया और कुछ साल दवा खाते खाते उन्हें कुछ फैसिनेशन आ जाता है. उन्हें लगता है कि कोई जो है पूरी तरह से जड़ से ठीक कर दे इसको. अदर मोड से आउट ऑफ द मोड जा करके वो दूसरा अल्टरनेट थेरेपी कुछ जो है लेना दवाएं शुरू कर देते हैं बाहर से विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन. और वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है. उसके वजह से सडनली जो किडनी उनका ठीक ठाक चल रहा था पूरा बैठ जाता है और आगे डायलिसिस की ज़रूरत आ जाती है. तो इन सब चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है. जिस तरह डायबिटीज़ आ गया, जिस तरह से हाइपरटेंशन आ गया, उस तरह से अगर सीकेडी किसी को हो जाता है तो उसको भी हमको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये साथ में रहेगा. इसके साथ हम दवा खाएंगे और नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे. हम कई बार बहुत सारा जो है अननेचुरल जो है इमेजिनेशन सोच करके चाहते हैं उसको पूरी तरह से जड़ से ठीक कर दें. उस चक्कर में हम फंस जाते हैं. Unfortunately, God has given us two kidneys, out of which one can be donated, and with one kidney, a person can lead a normal life. Normal life. That's true for the donors also. ठीक है. हमारे जो बॉडी में जो दिया गया है, ये समझ लीजिए सर कि एक किडनी रिजर्व दी गई है. एक किडनी काफ़ी है हमारे लिए. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को डोनेट भी कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को, घर वालों को, और हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं. इससे कोई कॉम्प्लिकेशन होने के डर नहीं रहते हैं. अगर ठीक है डोनेट करने वाली लेडी हैं तो आगे प्रेगनेंसी अगर उनको होगा तब हो सकता है हाइपरटेंशन वगैरह हो या पेशाब में प्रोटीन आने लगे. अदरवाइज नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे साथ. और एक अवेयरनेस लोगों में ये भी फैलाने की ज़रूरत है कि नॉर्मली लोग थोड़ा सा भी कुछ पेन होता है, ये होता है, दे इंडिस्क्रिमिनेटली गो ऑन टेकिंग एनाल्जेसिक्स. दैट्स ट्रू. वो एक वन ऑफ द मेजर कॉज है. बहुत बड़ा कॉज है सर वो. और आउट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, आउट ऑफ डॉक्टर्स कंसल्टेशन मेडिसिन एकदम हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है. हम खाना खाएं ठीक है पर दवा से दूर रहें. ये एक बहुत बड़ा रीज़न अभी इंडिया में हो गया. आई हैव सीन पीपल, आई हैव कम अक्रॉस पीपल इवन इन यंग पीपल. ठीक है. बहुत सारे मतलब इवन इन आवर फैमिली और क्लोज फैमिली हम देख रहे हैं. यंग एज में भी लड़कियां हैं तो वो ब्यूटी के लिए बहुत सारा उनके घर में प्रोडक्ट है जो चल रहा है. ये इससे ये होगा, ये उससे होगा. ज़रा सा देख रहे हैं मिडिल एज में है
तो उनको कुछ उनके फ्रेंड्स ने मेडिसिन पकड़ा दी है, कैप्सूल पकड़ा दिया, और वो खा रहे हैं, कहा है कि ये मेरे को आगे फिट रखेगा, रिजुवेनेट रखेगा, तो कोई इम्यूनिटी के नाम पर कोई दवा खिला रहा है, ये सब झूठ है। इन सबों से हमें बचना है। कोई दुनिया में ऐसी दवा नहीं बनी है जो हमारी इम्यूनिटी को जो है बढ़ा सके। कम करने का ज़रूर बना है, क्योंकि उसको ट्रांसप्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं। बढ़ाने के लिए ना कोई डाइट है ना दवा है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ झूठ है मार्केट में, जो दिन भर ऐड भी दिखाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन को डैमेज भी करता है। हम नॉर्मल डाइट लें, खूब सारा पानी पिएं, दवाओं से बचें, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी रहें, और एक हैंडसम जो है 6 से 8 घंटे की नींद हो, स्लिप हो। बस यही है जो हमें हेल्दी रखेगी, यही हमारी इम्यूनिटी को भी नॉर्मल रखेगी। हमें कैरिड अवे नहीं होना चाहिए, हमें धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, एडवर्टीजमेंट में नहीं फंसना चाहिए। इतनी अकल हमें रखनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल है आजकल के ज़माने में। यस डॉक्टर वहीद, जैसे इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 1 in every 5 पॉपुलेशन एंड 20% ऑफ पीपल आर डायबिटिक। सो इसमें ये ज़रूरी है कि ह्यूज चंक ऑफ पीपल आर डायबिटिक, इवन इट इज़ बिकमिंग वेरी प्रिवेलेंट इन द यंगर जनरेशन ऑल्सो, और जिनको लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये टेन्योर ऑफ डायबिटीज़ जितना बढ़ेगा तो किडनी डिजीज़ होने के चांसेस उतना ज़्यादा रहेंगे, प्रोवाइडेड आप डायबिटीज़ का ठीक से कंट्रोल नहीं रखें, इलाज नहीं करें। तो इसके लिए आप जनरल पॉपुलेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भी लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हुआ है या हाइपरटेंशन हुआ है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ इसको प्रॉपरली कंट्रोल रखें। ठीक है, कंट्रोल रखने के भी 2-3 मोड होते हैं। एक तो आप डॉक्टर से क्लोज फॉलोअप रखिए और मेडिसिन लेते रहिए, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी होती है, और तीसरा डाइट होता है। हर जगह यही 3 कंपोनेंट होता है। हम इसको फॉलो करेंगे तो चांसेस नहीं है कि आपको किडनी का डैमेज या हार्ट वुड किसी का भी डैमेज हो। हम ज़रा सा नेग्लिजेंट हो जाते हैं, ये हम नहीं फॉलो करते हैं, तभी प्रॉब्लम होता है। नहीं तो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वी हैव गॉट सेवरल एग्जांपल्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें डायबिटीज़ रहा है, और वो फास्ट बॉलर से लेके हर तरह से हर जगह वो रहे हैं। दे आर लिविंग प्रीटी नॉर्मल लाइफ, उनको तो कभी कोई किडनी ख़राब नहीं हुआ, हार्ट नहीं ख़राब हुआ। तो ये हम पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से लीड करें। इसमें भी लोग बहुत तरह का डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए लोगों को बहकावे में आ जाते हैं, और डिफरेंट मोड्स ऑफ थेरेपी इसका जो कि किडनी को भी अफेक्ट करता है, और इससे भी किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। ये तो सर सही में ये काफ़ी हो गया है, और इनफैक्ट आजकल कहा ही जाता है, हिंदी में ये टर्म है कि लोग टकले को भी तेल बेच दे रहे हैं, एंड दिस इज़ मार्केटिंग। हमको ये समझना पड़ेगा ये मार्केटिंग है और क्या है, और बड़ा मार्केट हो गया है। और इसके लीजिए सबसे बड़ा हमारा जो है वी कैन से इलिटरेसी है। पढ़े लिखे शायद हम लोग जाहिल हैं कि हम वी आर कैरिड अवे, हम किसी की कोई भी बात मान लेते हैं। इनसे हमें बचना है, और इसी वजह से हर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। डायबिटीज़ में भी जैसा आपने कहा सर, इतनी अल्टरनेटिव मेडिसिन आ गई है, खुलेआम उनका ऐड भी चलता है, लोग खा भी रहे हैं, गॉड नोज वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से लोगों को किडनी, हार्ट, बाकी भी बीमारी हो रही है, मर भी उतनी रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। पहले इतनी बीमारी नहीं थी, तो कौन कहाँ किसको डैमेज कर रहा है गॉड नोज, ये ग्रिड लगी हुई है। फाइनली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्ल्ड किडनी डे? सर यही मेरा मैसेज होगा कि हम एक हेल्दी लाइफ जिए, डाइट हेल्दी लें। आप क्या डाइट ले रहे हैं इट डजेंट मैटर, ये भी आपको हम खुल के बता दें। डाइट में भी बहुत सारे मिथ हैं, नॉन वेज खाने वाले अच्छे होते हैं, वेज खाने वाले अच्छे होते हैं, तो फलाना खाने वाले अच्छे होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स खाने वाले अच्छे होते हैं। ये सब दरमियान मुसीबत है। डाइट बहुत वेरिएबिलिटी है दुनिया में, ज़रा हम मूव करते जाएं दुनिया में। आज जो हम खा रहे हैं दुनिया के एक पार्ट में कोई अपनी ज़िंदगी में भी उसको नहीं छूता है, और वो जो खा रहा है शायद पूरी ज़िंदगी में हम नहीं छूते हैं। पर अगर हम एहसास करें तो शायद वो मेरे से जो है लंबा ज़िंदगी भी जीता है, और मेरे से ज़्यादा हेल्दी भी है। इसका मतलब ये कहने का है कि डाइट एक छोटा सा पार्ट होता है हेल्थ के लिए।
बाकी चीज़ भी हमारा प्ले करता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, हमारा दिमाग, हमारे जो मेंटल स्ट्रेस है वो कितने हैं, वो भी कम होना चाहिए, हम कितना रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। पानी वगैरह बहुत ज़रूरी है, हमें जब मौका मिले हम पानी पीते रहें, हाइड्रेट करें। पानी डजंट मीन कोल्ड ड्रिंक एंड जूस, सिंपल पानी, उसके बराबर कुछ नहीं है। और साथ में हम अनवांटेड मेडिसिन अवॉइड करें, कुछ नहीं लें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमें हैबिट डालना पड़ेगा, हम डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसकी एडवाइस लें। जो मिथ है मेरे दिमाग में, जो सोच है, जो हम सोच रहे हैं किडनी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, वो डॉक्टर से डिस्कस करें, रिलेटिव से और ऑनलाइन गूगल से हम डिस्कस ना करें। ये आदमी को और पागल कर रहा है। एक नॉर्मल स्टाइल जिए, नॉर्मल ज़िंदगी, अच्छे से सोएं, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है सर। थैंक यू डॉक्टर वहीद, आपने काफ़ी सारी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा और ये फॉलो करेंगे, और आप खुश रहें। और जो भी इस्तेमाल दवाई हो, जो भी करें, इट शुड बी एविडेंस बेस्ड, नहीं कि किसी के एडवर्टाइजमेंट के आके, किसी मिथ पे जाके, किसी के बहकाव में आके दवाई लेना शुरू करें जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। That's true. Thank you. Thanks a lot सर। और सिर्फ यही नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी किसी दूसरे को कोई दवा नहीं पकड़ाएं, उसको एडवाइस नहीं करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको, अगर वो मेरे से हेल्प चाह रहा है तो हम उसको प्रॉपरली गाइड करके किसी डॉक्टर का एडवाइस दें, रादर देन दिस के मैंने खाया था मेडिसिन तो हम उसको बोल दिए तुम भी खा लो। ये भी हमको बचना है प्लीज़। जो भी बाहर से खा रहा है सर कुछ भी दवा, उसको कोई ना कोई उसका फ्रेंड रिलेटिव उसको देता है, तो हमको ये इम्पल्स ज़रा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम जो है खाना पीना डिस्ट्रीब्यूट करें एक बीच में, मेडिसिन और मेडिकल एडवाइस नहीं। बाकी आई विश यू ऑल ए हैप्पी हेल्दी लाइफ, इंक्लूडिंग हैप्पी किडनी ऑल्सो। एंड जिनको भी ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है, आई रिक्वेस्ट देम कि अपना ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ आप कंट्रोल रखो, ये सबसे ज़रूरी है। किस दवा से कंट्रोल हो रहा है उसका भी बहुत रोल नहीं है, और इसका सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, आपको रेगुलर अपने डॉक्टर्स को दिखाते रहो, उसको चेक करते रहो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू।